Good morning, class 10. Trigonometry, Introduction to Trigonometry, chapter 8. And I have informed you, you can see the message. Half yearly examination is going to be from 1st October. Timetable you will be provided, but now you should concentrate on revision. So, although I have completed trigonometry introduction, but now this is time for examination, and therefore I am revising. So, in this introduction to trigonometry, although I have explained some more questions, whatever you have syllabus, but now we will concentrate only on the syllabus, because number of topics and number of subtopics have been deleted, have been removed by CBSE, and therefore, so complementary angle जो हम बता रहे थे, whatever we are explaining, that has been removed, and therefore trigonometric identities very important, because in class 11 and 12, if you are moving on with mathematics, this is very important. So, sin square plus cos, a number of identities, but I will give you idea how will you remember what is the technique to learn. Suppose this is theta. From these three important, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square minus tan square theta is equal to 1, cos square theta minus cot square theta is equal to 1. From these we can transfer and we can get number of formula. So original formula of this. And if you know sin and cos, so you can find all the values of other four trigonometric lists. Either values of formula, because tan is equal to sin by cos. So if you know the value of sin and cos, you can find the tan. Suppose sin 30 का value निकालना है. Yeah, I'm sorry, it's the tan 30. So sin 30, cos 30, if you know, you will use this formula. And tan and cot opposite, I have explained you. Sin, cos, tan, 6 trigonometric ratios. Sin, cos, tan, and other three are opposite of these three. Cosec opposite of sin, cot opposite of tan, and sec opposite of cos. उल्टा भी बोल सकते हैं. Cos is opposite of sec. So anyway, these three I explain. You should also learn how can you derive, how can you form, how can you find sin square plus cos square equal to 1. देखिए, एक तो तरीका ऐसा है कि इसको हम sin थीटा मानते हैं. This is h, for this angle this will be p, this will be b. So sin theta is equal to, देखिए हम p, b और h से सॉल्व करते हैं. तो sin theta is equal to p by h. स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर दीजिएगा. ऑन द स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. नंबर 1. नाउ फाइंड cos theta b by h. स्क्वायरिंग cos स्क्वायर theta is equal to b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. नंबर 2. On adding these two. अब बोले सर ऐड क्यों कर रहे हैं? समटाइम्स वी ऐड, समटाइम्स वी सब्ट्रैक्ट. ये देखिए प्लस का है तो ऑन ऐड करेंगे. तो ऑन एडिंग क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड p स्क्वायर बाई h स्क्वायर एंड b स्क्वायर बाई h स्क्वायर. लेफ्ट साइड you ditto you have to write. Right side common, yes, sorry, LCM. Diameter will be p square plus b square. Left side ditto p square plus b square is equal to h square by Pythagoras theorem. ये देखिए
इज इक्वल टू 1। साइड से भी कर सकते हैं, साइन थीटा ए बी बाई ए सी, एक ही मतलब। सो इस तरह से हम किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको प्रूव करने के लिए। उसी तरह से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यू विल ट्राई टू प्रूव बाय ड्राइंग ए राइट ट्रायंगल एंड टेकिंग वन एंगल थीटा और ए बी सी व्हाटएवर। सो नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट these three are important, although all are important। जैसे देखिए sec इक्वल टू 1 बाई cos। अब ये याद करने को जो नहीं है, if you have taken to learn all this, cos is equal to cos opposite of sec या sec opposite of cos, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो sec is equal to 1 by cos और cos is equal to 1 by sec। डिक्टो opposite of sin, cosec, cosec is opposite of sin, reciprocal। And tan and cos opposite of each other, so tan is equal to sin by cos, cos is equal to cos by sin। So ये जो टेक्निक है, वैसे बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन if you, this is my advice to you to learn this, or you can prove by geometry। By geometry you can prove sin square plus cos square is equal to 1। और यदि आप इसको भी देखना चाहते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो इसको भी हम करके दिखाते हैं। But I suppose you can solve yourself। But anyway, now sec theta, so sec theta is equal to h by b। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 1। tan स्क्वायर, tan इज इक्वल टू p बाई बी, स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा नंबर 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बोले सर इन फर्स्ट यू हैव एडेड, नाउ हियर यू सी माय डियर स्टूडेंट, हियर इज नेगेटिव, so we subtract second from 1, 1 minus 2, so left side sec square theta minus tan square theta, the right side x square upon b square minus p square upon p square, LCM b square, x square minus p square is equal to b square, yeah, and this will be cancelled। तो मैथमेटिकल या पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। In Pythagoras theorem, you know very well in geometry, in a right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular angles। Or from this formula you can derive the other two, p square is equal to, so you transfer b square from right to left, so it will be h square minus b square, and if you find p, so that will be root, and similarly b square, so you can say h square minus p square। Yeah, so Pythagoras theorem is very important in trigonometry, and this is the base of trigonometry, and therefore it is my advice you to concentrate, you should learn some technique। Sorry, you should try to understand the process, and then you have to prove। So proving जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। So जितने भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, you can see and you can derive yourself। So you should also learn the technique to learn everything you cannot remember, just like Pharaoh, and therefore it is my advice to learn some basic, to learn some technique, to remember the formula and math। So now I solve one question, and question number
So this is the 8.4. 8.4 क्वेश्चन बहुत आसान है. देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला है फर्स्ट 8.4. You convert sin A, sec A and tan A in form of cot A. इसको cot A के रूप में कन्वर्ट करना. अब देखिए sin A को कन्वर्ट करना है जिसमें cot A. अब sin का डायरेक्ट फॉर्मूला cot में तो लिख नहीं सकते, तो sin को लिख सकते हैं 1/cosec. और cosec का फॉर्मूला देखिए, ये आपको यहां बताते हैं. cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो cosec इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर अंडर रूट. तो इसका मतलब हुआ cosec इन प्लेस ऑफ cosec A we can write 1 plus cot square A under root. Yeah. तो क्या हो गया? sin A converted into cot. अब बोले सर how can, तो ये आप बनाएंगे cos sin is equal to 1/cosec. You know very well. cosec का फॉर्मूला इससे हम निकाल लेंगे. कितना आ जाएगा? cosec का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर. स्क्वायर पर ट्रांसफर करेंगे रूट हो जाएगा 1/√1 प्लस cot स्क्वायर. That is conversion of sin A in form of cot. sec A. देखिए sec A. अब sec A को cot में कन्वर्ट करना है. तो ये देखिए sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A. tan करेंगे तो 1/cot हो जाएगा. या अब sec A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर का अंडर रूट. तो sec को लिख देंगे क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर A अंडर रूट. अभी हुआ नहीं, बिकॉज वी हैव टू चेंज इनटू cot. tan का वैल्यू होता है cot 1/cot. तो अंडर रूट 1 प्लस इसको क्या लिख देंगे? 1/cot स्क्वायर A का अंडर रूट. और इजिकल टू एलसीएम निकालेंगे cot स्क्वायर A एंड हियर विल बी cot स्क्वायर A प्लस 1. ये पूरी का अंडर रूट है, इसका अंडर रूट निकल जाएगा cot A and this will be cot square A plus 1. ये sum है and therefore this cannot be cancelled and this will be out of the root because cot square का under root cot. So this is changed into cot A. उसी तरह से tan का तो बिल्कुल सिंपल है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/cot A. So in this way we can compare any trigonometric ratio in other form by using different identities. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सम trigonometric ratios are given. Now you write all the terms in sec A. सारे को sin इसी तरह से इसको ही बनाएंगे. इवैल्यूएट 63 इसको आप छोड़ देंगे. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मोटिवेशन है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे. 4 में देखिए चॉइस में फर्स्ट 9 कॉमन कर लीजिए, तो ये sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A. अब ये टेक्निक दिस इज इक्वल टू 1. 9 into 1 माइनस 9 इस तरह से बनाएंगे. थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बिकॉज दिस इज मोटिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मोटिवेशन नहीं है सिलेबस में. और नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 5. तो 5A से आप बनाइएगा. देखिए हम ट्राई करते हैं.
तो 5A को 1 क्वेश्चन solve कर देते हैं and then you will try to solve other. So many questions are given in the R.D. Sharma book or Agrawal book, and so you can prove given trigonometric identities. Now question number 5. First, cosec theta minus cot square theta is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. From any side you can start, either from left side or RSS. So, begin. We start from left side. Left side is cosec theta minus cot theta whole square. Cosec formula लगा देंगे 1y sin. In most of the question, trigonometric ratio are converted into sine and cos, but this is not the definite. This depends upon the question. Cot is equal to cos by sine square. You find the LCMs, sine theta. This will be 1 minus cos theta whole square. Now you separate this 1 minus cos theta whole square, and denominator is also sine square theta. 1 minus cos whole square means you can write 1 minus cos into 1 minus cos, and sine square is equal to 1 minus cos square theta. Denominator you see 1 means 1 square, 1 क्यों भी हो सकता है, a square minus b square के रूप में है, तो denominator कितना आ जाएगा 1 plus cos a plus b into a minus b. Algebra. In trigonometry we also use some algebraic identity. 1 minus cos theta, and this is 1 minus cos theta. 1 minus cos theta, this will be cancelled. Now you are getting 1 minus cos upon 1 plus cos. And this is LHS is equal to RHS. That's all. Is it? So from left side we have change cosec into 1 by sin, cot cos by sin, LCM, and then you find the LCM whole square. दिया whole square का मतलब जैसे a by b whole square है, इसको सेपरेट लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं a square by b square. इस तरह से हम a minus b whole square a minus b into a minus b. Square का मतलब है product of a term by itself, that is called a square. 1 minus cos into 1 minus cos, and this is the algebraic identity. A square minus b square. A plus b, a minus b. 1 minus cos cancel, 1 minus cos by 1 plus cos. और इसी को यदि रिवर्स प्रोसेस में करें तो you can also solve by RHS. RHS से क्या करेंगे 1 plus cos से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए 1 minus cos. 1 minus cos से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये आएगा. ठीक, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो RHS में बना सकते हैं. So this is question number 1, and remaining question you will try to solve. Otherwise we will come tomorrow and I can explain. Thank you and have a nice day.